Good morning, class 5th. How are you, children? I hope you all are fine. So, class, this is your maths period. Take out your maths notebook and your maths book. Open your maths notebook and put today's date. Today is 30th of September 2020. Then write down classwork and then write down the heading use of brackets. Use of brackets. Done. Now children, take one sketch pen and draw a bracket. This is a bracket, all right? This is our first bracket. Then this is our second bracket. And this is our third bracket. This is our first bracket. This is the second bracket. And this is the third bracket. All right. कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो हम सबसे पहले किसी क्वेश्चन में अगर तीनों ब्रैकेट्स होते हैं तो हम सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं एंड देन ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. ऑल राइट. नाउ अभी हमने क्या पढ़ा था? डी मास. नाउ राइट डाउन बी ओ डी एम A S. BODMAS. BODMAS. All right. So B denotes bracket. Off denotes O denotes off. D denotes division. Multiplication, addition, and subtraction. So BODMAS means bracket of divide, multiply, addition, add and subtract. Bracket of division, multiplication, addition and subtraction. Now children, note down question. Simplify. Three plus 4 bracket of multiply by 5. 3 plus 4 multiply by 5. So अब हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट. BODMAS के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट. सो 3 plus 4 is equals to 7. 3 plus 4 is equals to 7 multiply by 5. Now 7 5s are 35. This is the answer. Easy. Now note down next question. Bracket 18 minus 3 divided by 5. अगेन सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? BODMAS के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को.
So 18 minus 3 is equals to 15 divided by 5. Now 15 divided by 5. Divide 15 by 5 in rough notebook or rough paper. Answer will be 3. Alright. Now see 7 divided by 10 minus 3. 7 divided by 10 minus 3. सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को. सो 7 एज इट इज, डिविजन एज इट इज. 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7. 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7. नाउ डिवाइड 7 by 7. आंसर विल बी 1. Easy. Now note down one question. 7 plus 18 divided by 9 divided by 3. So this is the question. 7 plus 18 divided by 9 divided by 3. अब सबसे पहले हम कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे. सो 7 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 9. 18 को 9 से डिवाइड करिए. 2 bracket of divided by 3. Now solve this bracket. So 7 plus 2 is equals to 9 divided by 3. Now divide 9 by 3 in rough. Answer will be 3. Alright. Now note down next question. E bracket 60 divided by 3 multiply by 5 divided by 27 minus 2. So this is the question. अब सबसे पहले हम कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? इस वाले ब्रैकेट को. सो ये वाला ब्रैकेट हम ऐसे ही लगाएंगे. 60 डिवाइडेड बाय 3. डिवाइड 60 बाय 3 इन रफ. यू विल गेट 20. सो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 27 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 25. नाउ सॉल्व दिस ब्रैकेट. सो 20 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 100 divided by 25. Now children, divide 100 by 25 in rough. Answer will be 4. ये आप डिवाइड करके देखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि आंसर हम सही कर रहे हैं या नहीं. All right. Now note down next question. 42 divided by 18 divided by 2 into 3. So this is the question. तो अब हम सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट. सो 42 एज इट इज, डिवाइड का साइन एज इट इज. 18 डिवाइड 2 3s are 6. Now 42 divided by 18 divided by 6. Divide 18 by 6. Divide 18 by 6 in rough. You will get 3. 6 3s are 18. Now divide 42 by 3. अब हम 42 को 3 से डिवाइड करेंगे. Divide 42 by 3 in rough. Answer will be 14. All right. Now next 42 minus
18 divided by 2 multiply by 3. So this is the question. So firstly we'll solve the first bracket. So 42 minus 18 divided by 2. 18 को 2 से डिवाइड करिए, 9 मल्टीप्लाई बाय 3. 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज. नाउ 42 माइनस 9 3s are 27. 9 3s are 27. Now subtract 27 from 42. 42 minus 27 is equals to 15. Okay. Now part H. $60 minus 3 into 18 divided by 2 plus 4 bracket. Firstly we'll solve the first bracket. So 60 minus 18 into 3, multiply 18 by 3, you will get 54 divided by 2 plus 4 is equals to 6. Now 60 minus 54 is equals to, 60 में से 54 को माइनस करिए, 6 divided by this 6. Now divide 6 by 6. 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1. Okay. Now children, mark your homework for today. Open your maths book and come to page number 72. Exercise 5B. So in exercise 5B, do question number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 and 16. These are some questions. These are very easy. You have to do these questions in your home under homework heading. Okay. So firstly write down today's date, then write down homework. After that write down exercise 5B and then solve these questions. Okay. So that's all for today's class. Thank you so much class 5th. Take care. Bye bye.